actually put out the numbers for Punjab. I think everyone wants to see the numbers for Punjab. What is the seat projection for Punjab? Very possible. BJP 4, Aam Aadmi Party 4, and Congress 5. No, very possible. Padmaja, Patiala, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, and even Ludhiana. These 5 seats are strong. जालंधर में जिसको खड़ा उन्होंने किया है वो उसको भगाया गया जालंधर से, भगाया गया वो जालंधर हो ही नहीं सकता। मैं जालंधर में रहा हूं भाई। और पटियाला, आप तो दिल्ली में भी रहे, आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दे रहे थे यार, क्या बात कर रहे हो? Okay, let's try and understand this. Let's try and understand this. You think, Tushar, that this is very possible? Absolutely. Which are these 4 seats and why? You're looking at Gurdaspur and Hoshiarpur from the last time. Okay. Those can be retained. You can look at Ludhiana. You can look at Patiala. Praneet Kaur is now BJP candidate. Let's not forget. And Patiala is her bastion. And Amrinder Singh has goodwill. At the end of the day, people are like saying, Raja Sahab, Patella has not campaigned. he hasn't campaigned, but he wrote a letter yesterday for Praneet Kaur. कैसे? अरे भाई वो उनके साथ है, किसके साथ है? आपको पता है पंजाब में सुनिए कैंपेन के लिए don't have to go out there. पंजाब में उन्होंने पंजाब की राजनीति में आज तक अमरिंदर सिंह और बादल साहब के बीच में टकरार होते रही। जब बादल साहब आते थे अमरिंदर सिंह को अंदर कर देते थे। सुनिए पूरी बात कैसे बने, किससे शिरोमणि अकाली दल एंड अमरिंदर सिंह कैन नॉट स्टे टुगेदर एवर। अब अमरिंदर सिंह आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये दिस इज वेरी अनलाइकली अलायंस एंड दैट इज व्हाई अमरिंदर सिंह इज नॉट कैंपेनिंग ऑन ग्राउंड। कैंपेन ही नहीं कर रहा भैया। आकाश भाई साहब, आप 2 मिनट पहले दिल्ली में कांग्रेस और आपके अलायंस की बात कर रहे थे, 2 मिनट बाद आप कह रहे पंजाब में कांग्रेस और आप अलग लड़े, आप तो अलायंस की बात नहीं करें। नंबर 2, पद्मजा, Punjab has been one state that has been immune to the Modi wave since 2014. That's what we have discussed. In 2019 also, it was probably the Modi factor that got them Gurdaspur, where Jhakar lost against Sunny Deol, and Jhakar is easily the strongest Hindu leader in Punjab at this point. They won Hoshiarpur. Hoshiarpur is where the last rally was held. No surprise it can come to the BJP. The 2 seats I'm looking at, 2 of the 3 is either Ludhiana or Patiala or Jalandhar. 2 of the 3 these seats could come. So 4 is not an impossible number. What I will be interested in is what is the Shiromani number at the end of the day. Okay, let's take a look at the vote share also. Very quickly, let's take a look at the vote share. What is the vote share in Punjab? You have got Aam Aadmi Party at 28%, BJP at 22%, Congress has the highest at 30%, and Shiromani Akali Dal is at 17%. Can we quickly take a look at the comparison from last time as well in terms of the seat share? The comparison is BJP growing, Congress coming down, Aam Aadmi Party naturally is the biggest gainer, and the Shiromani Akali Dal is the biggest loser. So this, JVC. See, I have to put a point here clearly saying that Hindu votes are getting consolidated in favor of BJP. It is not dividing. The Sikh votes are dividing. There is a separatist tendency in certain rural pockets of Punjab, and that is where you will see the noise about anti-BJP campaign. But that noise, if you are going to fall for, you will say BJP is 0. But that noise is visible only in the rural. But look, which are the seats you're giving to BJP in that? What are the seats you're giving? We will tell you this on Monday. We won't give you the exact seats right now. But I can tell you for a fact that Patiala Congress is winning, so I would add Patiala out. How? Patiala Congress. But Patiala Congress is winning. I can tell you this. But he's saying Patiala BJP is winning. Congress. Okay, Jay, what do you make of these numbers? So I'll just tell you my overall observations from my friends who have toured Punjab. They have told me only one story of how you have had the BJP candidates being chased out of their villages and largely by the farm unions. Given that kind of reaction, how plausible does this figure of 3 to 5 look to you, Jay? I think one thing that a lot of the BJP workers we spoke to on the ground much 8-10 months earlier said, if the Congress and the AP contest separately, we have a chance in 4. Which they have. Which actually appears to be borne out. So, and that was much closer to the farm agitation than we are today. So perhaps that assessment holds water. कि अगर ये दो अगर अलग से लड़े तो हमारा 3-4 सीटों में चांस बनता है. Okay, Akashdeep Muni. I want to ask one question to Jay, that are you counting 0 as SAD A and SAD both? नहीं, अभी तो हार जाएगी. शिरोमणि अकाली दल और अभी तो हार जाएगी ना वो.
शिरोमणि अकाली दल भी हार देगी ना। और शिरोमणि अकाली दल ए वो by दोनों को election एक साथ आप कर रहे हो, वो by वो दोनों साथ में ही है, वो दोनों साथ में ही है। क्योंकि खदूर साहब भी हाँ, दोनों साथ में ही है। वो बाई इलेक्शन भी जीते थे ना जब सीएम बन गए। संजू वो साथ में वर्मा, संजू वर्मा। Padmaja. जितने भी आम आदमी पार्टी के जीते Padmaja, I'm not in the studio. Can I at least have my Okay, say? Sanju Verma wants to come in, Thank you. please. Yes. Thank you. You know, Padmaja, let's be very clear that in Lok Sabha 2024, there are two factors which are going to work for BJP in Punjab. You have Captain Amrinder Singh, who's now with the BJP. You have Sunil Jhakar, an organizational grassroots person who's no longer with the Congress and with the BJP. But more importantly, please understand that the people of Punjab are fed up with Bhagwan Singh Mann. He made promises worth 50,000 crore. मैं तो गेहूं और पैडी एमएसपी जो मोदी सरकार तय करेगी उससे 15-20% ज्यादा एमएसपी के ऊपर मैं धान की खरीदारी करूंगा, कुछ नहीं हुआ. पराली बर्निंग इशू रिमेन्स अनसॉल्व्ड. He says I will give 1,500 rupees to every unemployed youth. That promise has not been fulfilled. He said I will give 3,000 rupees per month, to women who are between 18 to 60 years of age, subject to checks and balances. And Punjab is reeling, and actually ready to fall off a cliff. जिस स्टेट की पूरी इकोनॉमी की जीडीपी 4-5 लाख करोड़ है, वहां डेट इज ऑलरेडी 3.5-4 lakh crore. I mean, look at the kind of mess which first the Congress made, and then the Aam Aadmi Party has only made things from bad to worse. But more importantly, the last important point is this to Akashdeep Muni. When you talk of the Kejriwal model, Tehseen, can I please finish? When you talk of the Kejriwal model, the people of Punjab will judge Kejriwal's performance, and that is going to have an adversarial impact in Punjab also. Swati Maliwal का फैक्टर नहीं था जो इस बार है. दिल्ली लिकर स्कैम का फैक्टर नहीं था जो इस बार है. लास्ट ईयर ड्यूरिंग फ्लड्स केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, घुटने टेक कर कहा मुझसे ना हो पाएगा. Amit Shah, the Modi government had to step in to rescue Delhiites. PWD and sanitation fall under Kejriwal, not under the LG. तो प्रॉब्लम इज केजरीवाल एंड गवर्नेंस का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है. एंड द पीपल ऑफ पंजाब विल पनिश केजरीवाल फॉर हिज फेल्ड केजरीवाल मॉडल. Okay, Akashdeep Muni. This is very interesting that Bharatiya Janata Party whenever speaks lies, झूठी बोलते हैं, क्या करना है. The interesting factor is आज तक पंजाब की हिस्ट्री में कभी भी दोपहर में फार्मर्स को लाइट नहीं मिलती थी. पहली बार पंजाब के इतिहास में दोपहर में आफ्टरनून में लाइट आ रही है और वो खेती कर पा रहे. आज तक पंजाब में कभी भी संडे को लाइट नहीं होती थी. आप जाएंगे जलंधर में, आप जलंधर की बात कर रहे हो, जलंधर में 9 से लेके रात को 9 बजे तक संडे तो नहीं रुके. पंजाब surplus. I don't know where the power surplus. Captain's fighting BJP was to supply power to Pakistan. Now clearly Congress and Aam Aadmi Party supporters can't get along. Okay, one at a time. Gentlemen, you both support parties that are in alliance with each other. I suggest you solve your problems internally first. पंजाब में लाइन्स नहीं है, पंजाब में 10 सेकंड में मैं डेट की बात करूंगा. जो ये बता रहे थे कि 2.5 लाख 3.5 लाख करोड़ का डेट है, आप भूल गए हो. 2015 में आपकी सरकार थी, 2.5 लाख करोड़ के डेट में आप छोड़ के गए थे. फिर वो 4 लाख 4.5 लाख करोड़ हो गया था जब आम आदमी पार्टी ने टेक ओवर किया. अब डेट घट रहा है. आप थोड़ा सा चेक करिए. और सुनिए, झूठा है ये आदमी, और मतलब सरासर झूठ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पंजाब में क्या दोपहर. Okay, let's. I think JVC wants to make a point and I'll move to Bihar. मैं आपको आज चलो 5 सेकंड. उन्होंने मुझे झूठा बोला ना, 5 सेकंड मैं छोड़ दूंगा. मैं आपको तुषार जी, मैं आपको पूछता हूँ, एक मोनोपोली चलती थी, इंडो कैनेडियन बस सर्विस थी. पता है आपको? पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? पंजाब में चीफ मिनिस्टर मॉरिटोरियम मांग रहा है. तुम्हारा चीफ मिनिस्टर 5 साल का मॉरिटोरियम मांग रहा है. सुनो कान खोल के. अरे भगवान से डरो, झूठ मत बोलो. Okay, gentlemen, let's come back to the number. इंडो कैनेडियन बस सर्विस चलती थी सालों से. पंजाब में मोनोपोली चलती थी. पहली बार 10 साल में उसने अपने टैरिफ कम कर दिए क्योंकि ना कि सरकारी बस सर्विस अब चलने लगी है. Akashdeep Muni, if everything was so hunky-dory, you would have been rewarded with all 13 of 13 seats. That clearly has not happened. It will not happen. According
according to these numbers, there is. नहीं होगा इतना क्योंकि ना कि कांग्रेस भी है and Congress is not fighting. But you said 8 seats से था. What we have witnessed in the last 5 minutes, what we have witnessed in the last 5 minutes in the studio is the seeds of contradiction with which the India alliance was formed. We saw the Congress supporter and the AAP supporter talking about Punjab. That is the story of 2024 election. Pretty much everywhere. 100%, whether it be Kerala, whether it be West Bengal, whether it be Punjab, whether it be Delhi. But I want to go to the Bihar numbers now.